Today we are going to start with very basic but very important topic and formulas that all are related with surface area and mensuration. So this is basically just an introduction part. We'll go through all formulas, all important formulas in mensuration chapter as well as in surface area and volume chapter. So 10th standard it's mensuration and for 9th standard it's surface area and volume. So all this formula is very important. They are very useful in 10th standard as well as in 9th standard. So listen very carefully, pay attention, and if you have any doubts, you can just drop it in comment section. I will definitely solve all your doubts. Okay, let's begin. Mensuration. The term mensuration means measurement. It's measurement of any object. Now this object can either be 2D object or it can be 3D objects. Let's take some example and formulas of first 2D objects, then we will move ahead with 3D objects. Okay, let's begin with 2D objects. See, 2D objects are basically figures like circle, square, triangle, which we can draw on papers. And 3D objects are objects which we cannot draw on paper. Like not exactly we can draw on paper. Like you cannot draw a cuboid on paper, or you cannot draw a cone, like exact cone on paper, but you can easily draw 2D object. We cannot easily draw 3D objects. So first we'll see formulas of 2D objects, then we will move ahead with 3D objects. Okay, so here we have name, figure, perimeter and area of 2D object first. Now first 2D figure is circle. Now we all know how circle looks. Circle have two important components, that is one is center and other is radius. Now perimeter, we need to find perimeter of this circle. Now students, if you recollect, perimeter means addition of all sides, or in other words, perimeter means boundary. Now if you observe this circle, for this circle, boundary is nothing but circumference. That means for this circle, boundary is circumference. That means for circle, perimeter and circumference is one and the same. So don't get confused if they ask perimeter of circle. Perimeter means circumference of circle, and we all know circumference of circle is very good. It is 2 pi r. So we can write perimeter of circle is 2 pi r. Okay. Next, area of circle. We also know area of circle is very simple, pi r square. Next 2D figure. We'll see rectangle. Now in rectangle, we all know 4 angles are there and each angle is 90 degrees. So rectangle look like this. Second important thing in rectangle is opposite sides are equal. That means if you take two opposite sides as length, other two opposite side will be breadth. Now again, perimeter means addition of all sides. Now if you add all sides, you will get L plus L, B plus B. So it will be 2L plus 2B. So if you take 2 as common, in bracket will be left with 2 bracket L plus B. And area of rectangle is again very simple, length into breadth. Next 2D figure, very simple, square. Now what is difference between a rectangle and a square? We all know in rectangle opposite sides are equal and in square all sides are equal. So here we'll take one square in which all sides are equal. Now here we have assumed that each side is L. We'll take it as each side as value of each side to be L. That means there are 4L. So perimeter means again we'll add all these 4 sides. So it will be L plus L plus L plus L, 4 times L. So it will be 4L. And area of square we all know that is side square. But here we took side as L. So area will be L square. Okay. So I guess everyone is clear with this 2D figure. So 2D figure, we have taken three 2D figures, circle, rectangle and square. And we wrote their perimeter and area. If you want, you can pause video now and take screenshot of this. So you can keep it to yourself for revision later on. Okay. Now let's move ahead with 3D figures. First 3D figure, we'll start with cuboid. Now before going ahead with cuboid, let's take some example of cuboid. We all know how your tiffin box looks. सबको पता है, everyone have seen a tiffin box. ठीक है? So this is an example of cuboid. Don't worry, we'll study in detail. Now let's take few more example similar to this. मतलब इस tiffin box के जैसा और क्या क्या दिख सकता है. See, we have wooden box. This is also a type of cuboid. Then we have fish tank, fish aquarium tank.
So this also looks like a cuboid. So all these are example of cuboid. If you observe geometrical figure of cuboid, it look like this. Now in this geometrical figure, if you observe, there are total 6 faces. See, observe carefully. 4 are vertical faces, the standing faces. That standing faces are vertical faces, and 2 are horizontal faces, top and bottom. So cuboid has 6 faces, from which 4 are vertical faces and 2 are horizontal faces. Remember, cuboid has how many faces? Cuboid has 6 faces, from which 4 are vertical faces and 2 are horizontal faces. See, now observe more. Let's observe in more detail. Cuboid has 4 corners at top and 4 corners at bottom. That means cuboid has 8 corners total, right? So cuboid has 6 faces, cuboid has 8 corners. Now let's hold one corner. Suppose I hold this corner. Now if you observe, from this corner there are 3 segments which are joined. ये दिख रहा है 3 segments, 3 segments are. So these 3 segments are nothing but 3 dimensions of cuboid. So if you hold any one corner, you will observe that there are only 3 lines that are originating from that particular corner. You can hold any corner and see. We have hold this corner, so there are 3 lines originating from this corner. These 3 lines are nothing but they are dimensions. There are 3 dimensions of cuboid. So 3 dimensions of cuboid are, we name it as length, breadth and height. Okay, so I guess everyone is clear with cuboid. Cuboid has 6 faces. From that 6 faces, 4 are vertical face, 2 are horizontal face. Next, cuboid has 8 corners. Then we have hold one corner. From that one corner, we get 3 dimensions of cuboid, that are length, breadth and height. Now let us quickly understand formulas, very important formulas, very interesting and very important formulas of cuboid. See, if you observe in this cuboid, there were 4 vertical faces, right? So first formula will be vertical surface area. Why vertical surface area? Because there were 4 vertical faces and 2 horizontal faces. So vertical faces means first formula will be vertical surface area. So first formula comes out to be 2 bracket L plus B into H. Here L, B indicate length and breadth and H indicate height. So we have first formula, that is vertical surface area of cuboid, that is 2 bracket L plus B into H. Next formula is total surface area. So vertical surface area means area of vertical faces. Now total surface area means area of all faces. Remember this, vertical faces का area, सिर्फ vertical faces का area निकाला, that means it is vertical surface area. And if you calculate area of all faces, that is called as total surface area. Remember, I guess everyone is clear with meaning of total surface area. Total surface area is nothing but addition of areas of all faces. So here we have 6 faces. So total surface area of all these 6 faces will be 2, it is very simple. See, 2 LB plus BH plus LH. You just have to make combinations. Yeah, the तीन dimensions, the length, breadth, height. You just have to make combinations. See, LB, then BH, then LH, and add 2 at starting. So it will be 2 bracket LB plus BH plus LH. Last very simple formula is volume. Now what is volume? See, the capacity of holding. If you observe this cuboid, can I put 500 mangoes in this cuboid? See, just observe and think and tell me. No, I cannot put, because it has very less capacity. But can I put one mango in that? Yes, it can hold one mango, right? So the capacity कि मतलब अंदर कितना fill कर सकते हो, that is called as volume. So volume of cuboid is nothing but LBH. Very simple, length into breadth into height. I guess everyone is clear with all formulas of cuboid. First is vertical surface area, because we have 4 vertical faces, that is 2 LB L plus B into H. Next, we have total surface area. Since we have 6 faces, so we calculated total surface area as 2 bracket LB plus BH plus LH. Then we have volume, that is LBH. Very simple. Now, let's move ahead with one more solid figure, जो इससे भी ज़्यादा simple है, that is cube. Now, before starting with cube, let us again see some example of cube. Cuboid के examples देखे थे, फिर cuboid पढ़ा था, अभी इसके भी पहले examples देखते हैं. See, जैसे ही cube बोलते हैं, सबके दिमाग में एक ही चीज़ आता होगा. See this Rubik's cube, सबने देखा है. Rubik's cube खेला भी रहेगा, कभी solve होता है नहीं होता है, ठीक है, but it's okay. This is a cube, example of cube. Then we have some ice cubes. So these are again examples of cube.
right? So here, if you observe geometrical figure of cube, it look like this. See now, observe here very carefully, very important. In cuboid, there were 6 faces. Yeah, the cuboid में 6 faces. But if you recollect, cuboid has length and breadth. Length and breadth है, that means cuboid का हर एक face was rectangle. Here in cube, each face is a square. मतलब एकदम सिंपल है. क्यूबॉइड के हर फेस को रेक्टेंगल था, वो रेक्टेंगल को हटाना है, वो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है. जैसे ही स्क्वायर बन गया हर एक फेस, दैट क्यूबॉइड will be transformed into cube. That means in cube, each face is a square. Again, here also, if you observe, there are 4 vertical faces, 2 horizontal faces. So cube also have 6 faces. Also, cube has 8 corners, four at top, 4 at bottom. Right. Now here, one important thing that you need to remember is this cube, each face, in this cube, each face is a square. Now, what is difference between a square and rectangle? In square, all sides are equal, and in rectangle, opposite sides are equal. So if this is in this cube, each face is a square, that means all sides will be equal of this one face. Like there are total 6 faces. If you hold one face and observe, it is a square. That means all side of this one face will be equal. That means length, breadth and height will be equal to each other. So in cube, we will take only one dimension, because if you take length as phi, breadth also will be phi, height also will be phi, क्योंकि square है, सब sides equal है. That is the reason we'll only take one dimension, that is length. Right, everyone is clear with this. So cuboid और cube में confuse मत होना. Cuboid में each face is a rectangle and cube में each face is a square. बाकी almost same है. दोनों में 6 faces होते हैं, 8 corners होते हैं. राइट एंड यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है, तो विल टेक ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ. एंड क्यूबॉइड में हमने लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग डायमेंशन देते हैं. राइट, हियर वी हैव, now let's move ahead with formulas. Here we have 4 vertical face. क्यूबॉइड के जैसे वर्टिकल फेस है, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला विल बी वर्टिकल सरफेस एरिया. वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज 4L². राइट, नेक्स्ट क्यूबॉइड में सेकंड फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? टोटल सरफेस एरिया. तो इधर भी सेकंड फॉर्मूला आएगा टोटल सरफेस एरिया. अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला 6L². एंड क्यूबॉइड में थर्ड फॉर्मूला था वॉल्यूम, मतलब अंदर की कैपेसिटी. तो यहाँ पे अंदर की कैपेसिटी, दैट इज वॉल्यूम, विल बी L3. अच्छा, L3 कैसा है? क्यूबॉइड का याद है, वॉल्यूम LBH, L इंटू बी इंटू एच. बट इधर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल है. दैट मीन्स इट विल बी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट विल बी L3. So I guess all 3 formulas are clear. Vertical surface, total surface, volume. Vertical surface is 4L², total surface is 6L², and volume is L3. Let's move ahead with one more very interesting solid figure, that is cylinder. अब cylinder, बिफोर स्टार्टिंग विद सिलेंडर, लेट अस सी सिलेंडर के भी एग्जांपल. ठीक है, अभी सिलेंडर सबने देखा होगा, सबको पता होगा. अभी सिलेंडर का बोलते से सबसे पहले आता है गैस सिलेंडर. ठीक है, गैस सिलेंडर के अलावा भी ऐसे शेप होते हैं जिसको सिलेंडर बोलते हैं. सी दिस इज पाइप. पाइप का भी शेप होता है सिलेंड्रिकल. देन वी हैव रोड रोलर. देखा सबने रोड रोलर? रोड रोलर का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, आगे का फर्स्ट व्हील, सो दैट रोड रोलर का जो स्टार्टिंग वाला व्हील है, आगे का व्हील, दैट इज नथिंग बट इट इज अ सिलेंड्रिकल. देन वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ गैस कंटेनर्स. जितने भी गैस कंटेनर्स है, एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, सब ऑल आर इन शेप ऑफ सिलेंडर. सो दिस आर सम एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. Let's move ahead with geometrical figure of cylinder. See, geometrical figure of cylinder look like this. If you observe carefully this geometrical figure of cylinder, here we have 3 faces. See, 3 faces. Let me tell you which are 3 faces. See, first is top. टॉप का सर्कुलर फेस दिख रहा है. देन वी हैव बेस. बेस का भी सर्कुलर फेस है. सो ये 2 फेस हो गए. देन इन बिटवीन वी हैव कर्व्ड सरफेस. दिख रहा है कर्व्ड सरफेस. सो इन सिलेंडर देयर आर टोटल 3 faces. 2 are circular face and between that circular face there is curved surface. अभी 2 circular face है. सर्कुलर फेस है मतलब सर्कल है, सर्कल. एंड सर्कल हैज 2 important thing, that is center and radius. So let's draw radius. तो दोनों सर्कल के रेडियस बना दिए. I guess everyone is clear till here. Cylinder has 3 faces. From that 3 faces, 2 are circular face, 1 is curved surface, and they have 1 dimension. जो अभी तक एक डायमेंशन आया अपने पास, दैट इज रेडियस. कैसे आया रेडियस? बिकॉज सर्कल था, तो सर्कल का 2 important thing we know, that is center and radius. तो दोनों जगह रेडियस मार्क कर दिया.
ठीक है. Now observe these two circle very carefully. These two circle are identical to each other. Identical means दोनों का रेडियस सेम होगा. अगर नीचे वाले का 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले का भी 5 सेंटीमीटर होगा. दैट मीन्स these two circle are identical to each other. दोनों का रेडियस सेम रहेगा. दैट इज द रीजन वी हैव मार्क देयर एज रेडियस. मतलब R1 R2 की जगह सिर्फ रेडियस मार्क किया. राइट. नाउ इफ यू ऑब्जर्व सेंटर्स, अगर मैं दोनों के सेंटर्स ज्वाइन करूं देन वी विल गेट हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. And if you further observe radius and height, they are perpendicular to each other. That means cylinder को right circular cylinder भी बोलते हैं. तो एग्जाम में right circular cylinder आया तो कंफ्यूज मत होना, वो लोग सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं. सिलेंडर एंड right circular cylinder are one and the same. क्यों बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर? बिकॉज इन सिलेंडर रेडियस एंड हाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. We'll quickly revise cylinder once again. Cylinder has three faces. Two are circular face, one is curved surface. Cylinder has two dimension, that is radius and height. So let's see formulas of cylinder. ठीक है, अभी सिलेंडर में फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, क्यूबॉइड एंड क्यूब में फर्स्ट फॉर्मूला वाज वर्टिकल सरफेस एरिया. अच्छा, क्यों था वो वर्टिकल सरफेस एरिया? बिकॉज वहां पे याद है 4 वर्टिकल फेसेस थे. यहाँ पे है क्या 4 वर्टिकल फेस? देखो ध्यान से देखो फिगर, 4 वर्टिकल फेस है नहीं है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है. दैट मींस सिलेंडर का फर्स्ट फॉर्मूला विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया. क्यों? बिकॉज यहाँ पे वी डोंट हैव वर्टिकल सरफेस, वी हैव कर्व्ड सरफेस. दैट मींस सिलेंडर का फर्स्ट फॉर्मूला विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया. याद रखना, क्यूबॉइड और क्यूब में देयर वर वर्टिकल सरफेस एरिया, बट सिलेंडर में इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो वर्टिकल फेस, हियर इट इज curved surface. So curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Very simple, 2 pi r h. Next बाकी का सेम है, बाकी का सेम. The next was total surface, सब surfaces का areas का addition. So total surface area of cylinder is again very simple. इससे मिलता जुलता है, ध्यान से देखना. 2 pi r h लिखा था curved surface में, तो h को हटा के ब्रैकेट में r plus h. So total surface area will be 2 pi r ब्रैकेट में r plus h. क्लियर है? नेक्स्ट क्यूबॉइड और क्यूब में क्या था इसके बाद? वॉल्यूम. सो सिलेंडर का वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, एकदम सिंपल है, ध्यान से देख लो सब फॉर्मूलाज. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच. एच के जगह पे आर प्लस एच लिखा है कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया में, ध्यान से याद रखना. नेक्स्ट वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. राइट, एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? आई गेस सबको, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, सबको अच्छे से समझा है. क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, 3 सॉलिड फिगर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड. वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल सॉलिड फिगर, दैट इज कोन. अभी कोन बोलते से ही कोन के एग्जाम्पल में सबसे पहले यही चीज आती है एग्जाम्पल में याद, एक ही चीज आती है, दैट इज वाओ यम्मी, आइसक्रीम कोन. सबने देखा रहेगा आइसक्रीम कोन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन. और थोड़ा सोचो कोन का और एग्जाम्पल्स, ये भी देखा रहेगा बर्थडे कैप. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कोन. एंड वी हैव सेंटा क्लॉज की टोपी, Santa Claus cap, that is again example of cone. So all these are examples of cone. Now let me bring to you the geometrical figure of cone. The geometrical figure of cone look like this. Now if you observe carefully, see, geometrical figure of cone has one circular face at bottom. दिख रहा है, एक सर्कल तो दिख रहा है, मतलब एक फेस तो कोन का हो गया, दैट इज सर्कल. नाउ इसके ऊपर जो वाला जो फेस है, इट इज नॉट वर्टिकल, इट इज कर्व्ड. ऐसा ट्विस्टेड है, कर्व्ड है. सो दैट मींस अदर फेस इज कर्व्ड सरफेस. मतलब कोन हैज टोटल 2 faces. One is circular face at bottom and one is curved surface. In cone there are 2 faces, circular face and curved surface. अब यार सिलेंडर में सर्कुलर फेस था, सर्कल था, तो क्या लाए थे अपन? सेंटर एंड रेडियस. तो यहाँ पे भी सेंटर एंड रेडियस आएगा. मतलब कोन में वन ऑफ द डायमेंशन इज रेडियस. अच्छा, सिलेंडर में इसके बाद क्या किया था याद है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था सेंटर से. तो यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. सो विल गेट हाइट ऑफ कोन. सो कोन के 2 डायमेंशंस तो क्लियर है. वन इज रेडियस, क्योंकि पहले सर्कल था इसके लिए रेडियस है, एंड सेकंड इज हाइट, जो सेंटर से हाइट बना है. सी नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, एक स्लांट जा रहा है, वो कर्व सरफेस के कारण एक स्लांट लाइन जा रही है. सो दिस स्लांट लाइन इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट. राइट, सो रिमेंबर दिस स्लांट लाइन इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट. ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर इन कोन
in cone radius and height are perpendicular to each other. So cone को भी right circular cone बोल सकते हैं, right? So cone has two faces. One is circular face at bottom and one is curved surface. Cone has three dimensions. One is radius, height and slant height. सबके initial से R, H and L respectively. Now students observe carefully. ये तीनों डायमेंशन मिलके कोई 2D फिगर बना है. देखो ध्यान से देखो. सी दिस थ्री डायमेंशंस दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिख रहा है सबको? सी देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सिंस रेडियस एंड हाइट आर परपेंडिकुलर तो राइट एंगल मिल गया वहां पे. एंड उसके सामने हाइपोटेनस भी है. So for this yellow right angle triangle, hypotenuse is slant height and other two sides are radius and height. And हम सबको पता है कि कभी भी right angle triangle दिखा तो एक ही चीज दिमाग में आती है, दैट इज वेरी गुड पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व पाइथागोरस, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इट विल बी, याद है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस 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 सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ other two sides का square. Very good. So यहाँ पे hypotenuse is slant height. So L square will be equal to R square plus H square. So remember this very important formula, that is slant height, that is L square is equal to R square plus H square. तुम बोलोगे सर फॉर्मूला काम किधर आएगा? See, whenever you have provided with radius and height, अगर radius and height दिया है तो we can easily find slant height by using this formula. सपोज यू हैव गिवन विद स्लांट हाइट, एल का वैल्यू दिया है, ठीक है, एंड आर का वैल्यू दिया है, एल एंड आर दिया है. कैन वी फाइंड एच फ्रॉम दिस? सिंपल है ना. मतलब यानी यहाँ पे इफ यू आर गिवन विद एनी टू वैल्यूज, ये तीनों टर्म में से कोई भी दो वैल्यू दिया है, यू कैन इजीली फाइंड थर्ड वैल्यू. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, बट ये सॉलिड फिगर है. सॉलिड फिगर में याद है तीन फॉर्मूलाज होते थे, या तो वर्टिकल या कर्व, टोटल, वॉल्यूम. तो इसमें भी होगा. ठीक है, अब इसमें वर्टिकल होगा कि कर्व्ड होगा, ध्यान से सोच के बताओ. सो इफ यू ऑब्जर्व कोन, याद है कोन के दो फेसेस, वन वाज सर्कल एंड अदर वाज कर्व्ड सरफेस. दैट मींस यहाँ पे भी देयर इज नो वर्टिकल फेस, देयर इज कर्व्ड सरफेस. सो फर्स्ट फॉर्मूला विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया. वेरी सिंपल फॉर्मूला, पाई आर एल, राइट. नेक्स्ट विल बी, वेरी गुड, नेक्स्ट विल बी टोटल सरफेस एरिया. इससे मिलता जुलता, पाई आर एल के जगह पे आर प्लस एल. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला, वेरी गुड, दैट विल बी वॉल्यूम. वॉल्यूम आएगा ना इसके बाद, कर्व्ड हो गया, टोटल हो गया, फिर वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला अगेन वेरी सिंपल, ध्यान से देखना. इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच अभी देखा था, याद है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. एग्जैक्टली, दैट मीन्स कोन का वॉल्यूम इज 1/3, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is volume of cone. That means volume of cone will be equal to 1/3 pi r square h. I guess cone के तीनों formulas clear है. First is curved surface, that is pi r l. Next is total surface, that is pi r bracket में r plus l. And next is volume, that is 1/3 pi r square h. Also one important formula जो Pythagoras वाला था, उसको भी मत भूलना, that is very important. L square is equal to R square plus H square. So cone has these four important formulas. I guess सबको clear है यहाँ तक. First we started with cuboid, then we saw cube, then we saw cylinder, then we saw cone. ठीक है, let's quickly begin with next solid figure. Very simple, very interesting, that is sphere. अभी sphere देखते से दिमाग में एक ही एग्जाम्पल आता है, that is देखा रहेगा सबने फुटबॉल. स्पीयर एक तरीके का स्पीयर. देन वन मोर एग्जांपल यू कैन से ग्लोब देखा सबने, अर्थ, ग्लोब, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ स्पीयर. नाउ इफ यू ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ स्पीयर, इट विल लुक लाइक दिस. सी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ स्पीयर. नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये स्पीयर में याद रखना देयर इज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज रेडियस. तो याद रखना स्पीयर हैज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज रेडियस. ठीक है, अभी रेडियस है, एक ही डायमेंशन है. ठीक है, अभी यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज होंगे, ध्यान से सोचते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से सोचते हैं हम. लेट्स फिगर इट आउट कि कौन से फॉर्मूलाज होंगे स्पीयर में. ठीक है, विल स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्मूला. क्या होता है नॉर्मली? फर्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया. वेरी गुड. सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पे कितने फेसेस है, ध्यान से देखो, एक दो, कितने फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे? एक ही फेस है, एक ही फेस को ऐसा घुमाया है कर्व्ड इसमें, एंड वी गॉट स्पीयर.
अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया? याद है टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग? टोटल सरफेस एरिया मीन्स एडिशन ऑफ ऑल फेसेस। बट यहाँ पे तो एक ही फेस है ना, एक फेस को किसके साथ ऐड करोगे? मतलब वी कैन नॉट ऐड दैट वन फेस टू समथिंग। एडिशन तभी पॉसिबल है जब वी हैव टू क्वांटिटीज। हियर वी ओनली हैव वन क्वांटिटी, मतलब एक ही फेस है, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन स्पीयर में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, बिकॉज वी कैन नॉट ऐड टू समथिंग, वी हैव ओनली वन फेस। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो नहीं रहेगा, उसके बाद में आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अगेन वेरी सिंपल, 4/3 पाई आर क्यूब। सो यू कैन रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलाज, दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते। सी वी हैव 4 पाई आर, इतना सेम है। ठीक है, 4 पाई आर लिख देना। फॉर वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। सी वॉल्यूम में ध्यान से देखो, 4 है, पाई है, आर है, सेम है कर्व सरफेस के जैसा। उसके बाद यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट 3। ठीक है, ठीक है, सो these are two important formulas of sphere. One is curved surface, that is 4 pi r square, other is volume, that is 4/3 pi r cube. यहाँ पे एक important चीज याद रखना, sphere will not have total surface area। क्यों नहीं होगा total surface area? Because it has only one face। total surface area तभी होता है जब एक से ज्यादा surface होंगे। ठीक है, let's move ahead with last and very important and very simple solid figure, that is hemisphere। ठीक है, अभी hemisphere के कुछ examples देखते हैं। ठीक है, अभी hemisphere के example के पहले सोचते हैं थोड़ा कि hemisphere का meaning क्या होगा। सी hemi means half, right? remember this कि hemi का मतलब क्या होता है? half। अभी किसका half है? hemisphere, that means it will be half of sphere। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल हाफ कट ऑरेंज, देखा मतलब एक स्पीयर ऑरेंज है पूरा, एंड उसको हाफ कट किया, तो हेमी हो गया, हेमी हेमी of that sphere, that means half of that sphere। Let's see one more example, that is bowl। Again if you observe this, this is not entire sphere, it is half cut sphere, that means again this is example of hemisphere। Let's see geometrical figure of hemisphere, which will also look like half cut sphere, and for this hemisphere will have only one dimension, that is radius। Now observe this hemisphere। See in this hemisphere we have two faces। फर्स्ट इज सर्कुलर फेस दिख रहा है ऊपर, टॉप पे सर्कुलर फेस है, एंड वी हैव कर्व सरफेस। ठीक है, बेस नीचे साइड में कर्व सरफेस है। सो हेमिस्फीयर हैव टू फेसेस, वन इज सर्कुलर फेस एंड अदर इज कर्व सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसमें कितने फॉर्मूलाज आएंगे? फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, सबको समझा जाएगा कि फर्स्ट फॉर्मूला विल बी कर्व सरफेस एरिया, तो पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें टोटल सरफेस आ सकता है क्या? सोच के बता। वेरी गुड, इसमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? बिकॉज देयर आर टू फेसेस। याद है मैंने बोला था टोटल सरफेस एरिया कब नहीं आता है? टाइम व्हेन देयर इज ओनली वन फेस, बट यहाँ पे तो दो फेस है, कर्व्ड एंड सर्कुलर, सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, राइट? So we have two formulas of hemisphere, that is curved surface and total surface, that is 2 pi r square and 3 pi r square। अच्छा, और कोई फॉर्मूला होगा? याद है कैपेसिटी अंदर की जगह, that is called as volume। So volume of hemisphere will be 2/3। यही ऑर्डर में ध्यान से देखो, पहले 2 लिखा था हमने कर्व में, टोटल में 3 लिखा है, so it will be 2/3 pi r cube। I guess सबको क्लियर है formulas, that is 2 pi r square, first curved surface area, then we have total surface area 3 pi r square, then we have volume 2/3 pi r cube। I guess सबको एकदम अच्छे से क्लियर होगा 2D figures 3D figures। ठीक है, you can take screenshot, you can pause video in between and take screenshot of all the formulas, so you keep it with them। Remember, all formulas are very important। if you need to score good marks in this chapter, you need to know all formulas thoroughly। अच्छा, जाने से पहले एक सेकेंड, जाने के पहले इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज मंजोत सर, जो दिख ही रहा होगा तुमको, एंड ऑल्सो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में, सबको काफ़ी काम आएगा ये फॉर्मूलाज का वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने कवर किए इसमें। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर विथ सेम ID, दैट इज मंजोत सर। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।